ओके सो यार लास्ट वाली क्लास के अंदर वी स्टार्टेड विद द वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आज उसका काम थोड़ा सा आगे कराना है। ऑलराइट, सो प्रीवियस क्लास में जो किया था ना वर्किंग, एक क्विक रिकैप को देख लो एंड देन विल कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, सो रिमेंबर वी ऑलरेडी डिड द वर्किंग के इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज इक्वल टू सो एंड सो जूल्स, ये कर लिया था। नेक्स्ट हमने बोला था कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन is given by the equation E is equal to hf or E is equal to h times c upon lambda. नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी रिकग्नाइज कर लिया था कि द फोटो इलेक्ट्रिक emission equation can be written in the form hf is equal to phi plus ke, or hf is equal to hf naught plus ke. In this equation, phi was the work function energy, phi was given by the equation h times f naught, where f naught was defined as the threshold frequency. ठीक है, ये इक्वेशंस का काम हमने कर लिया था। देन वी हैड आल्सो एस्टैब्लिश्ड, ये वाला एक पॉइंट में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, फ्रॉम द प्रीवियस कैलकुलेशंस, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। We had established that if the incident frequency is less than the threshold frequency, no emission occurs. Even if the incident frequency is equal to the threshold frequency, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे तो आ जाएंगे, emission नहीं होगी, but only if the incident frequency was greater than the threshold frequency. This was the only scenario where emission occurs. ठीक है, F in this case represents incident frequency. F naught in this case refers to threshold frequency. ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन लास्ट टाइम करके देखी थी कि if the incident frequency is less than the threshold, no emission. Even if the incident frequency is equal to the threshold frequency, still no emission. And only if the incident frequency is greater than the threshold frequency, that was the only scenario where we can expect photoelectric emission to take place. अब जो आगे की वर्किंग करनी है ना, that is with regards to graph construction. So यार दो ग्राफ्स बनाने हैं. The first graph is a graph of kinetic energy on the y-axis, kinetic energy of the electrons, against the incident frequency on the x-axis. इसका ग्राफ कैसे बनेगा और ग्राफ के salient features क्या क्या होंगे? If you use the equation hf is equal to phi plus ke, and if you rearrange this equation with the intention of making kinetic energy the subject, तो आपकी इक्वेशन का ये रिजल्ट आएगा, kinetic energy is equal to h times f minus phi. जिन टर्म्स को मैं रेड से लिख रहा हूं ना,
आप उनको ऑब्जर्व पहले कर लो। मैंने रेड से इसलिए लिखा है so that I can actually make a comparison with the standard straight line equation, which is y is equal to mx plus c. I think आपके लिए जरा जजमेंट करना convenient हो जाएगा. Yeah, how would the graph look like? So if you are interested in constructing a graph of kinetic energy of the electrons against the incident frequency, तो जरा comparison आप खुद करके देख लो. So on the vertical axis, if I plot kinetic energy, on the horizontal axis, if I plot the frequency of the incoming photons, so how would the shape look like? Should be a straight line with a positive gradient and a negative y-intercept. If you guys are okay with the statement, graph बना रहा हूँ, check कर लीजिएगा. So if the vertical axis represents kinetic energy of the electrons, horizontal axis represents frequency. So based on the relationship, we expect the graph to be a straight line with a positive gradient and a negative y-intercept. तो यार ग्राफ आपका काइंड ऑफ इस तरह का बन जाएगा जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. Sorry यार. So a straight line with a positive gradient and a negative y-intercept. I'm sure आप ये बात भी recognize करोगे कि the gradient of this graph compare करके देख लीजिएगा should give you the Planck's constant h. The y-intercept should give you the work function phi. And if I ask you x-intercept क्या provide करेगा? So can you realize in order to find out ना कि x-intercept क्या चीज provide करेगा, मैं wordings लिख देता हूँ, आप जरा check करना. At x-intercept, kinetic energy will be 0. तो you know अगर आप equation के अंदर kinetic energy को 0 कर दो तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा. वर्किंग का कुछ स्टेप रिपीट करना हो तो फिर बता देना. उमर ने सही लिखा हुआ है. If I replace phi with the term h f naught, अगेन जो टर्म्स मैंने रेड कलर से लिखे हैं उनको फॉलो कर लेना. तो एक कंपैरेटिव जजमेंट हो जाएगी कि व्हाट विल द एक्स इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट. कैंसिल आउट करोगे ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा. सो हेंस वी कैन से that is x-intercept in this case gives threshold frequency f naught. तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सपोज करे आपको कोई इस तरह का सिनेरियो देते हैं कि आपको सोडियम का वर्क फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज 1.5 eV, और सोडियम का ग्राफ भी आपको गिवन है. So the work function of sodium is provided to you and the corresponding graph for sodium is also given to you. So let's suppose this is the graph given to you for sodium. Okay, if the question says on the same axis construct a graph for calcium
which has a higher work function than sodium. तो कैन यू रियलाइज अगर आपको कैल्शियम के लिए इसी एक्सिस पे ग्राफ बनाना हो वेयर सोडियम के मुकाबले में कैल्शियम इज सपोज टू बी हैविंग अ हायर वर्क फंक्शन, फॉर्मूले की बेसिस पे आई थिंक जज करना पाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट. So a higher work function corresponds to a higher threshold frequency, that is a higher x-intercept. Therefore, the new graph will remain parallel but will have a greater x-intercept. Why will it remain parallel? In case if you're wondering, so remember the gradient gives you Planck's constant. तो parallel होने का reason लिख देता हूं. Gradient gives you h. Since h is constant, therefore parallel. ठीक है, so in short, आप ग्राफ को कंपेयर करके देखोगे ना तो आपको रिकग्निशन हो जाएगी कि जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा हाई होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज आल्सो गोइंग टू बी हायर. And since the x-intercept of the graph in this case gives you the threshold frequency, therefore you would expect कि कैल्शियम के केस के अंदर the graph should correspond to a higher value of f naught. मैं मार्क भी कर देता हूं. So the x-intercept is the threshold frequency which is supposed to be higher because the work function is greater. Okay. Higher in terms of magnitude only, right? Yes, higher in terms of magnitude only. ठीक है, ये तो एक ग्राफ हो गया. अच्छा, अब इसके साथ एक और ग्राफ की डिस्कशन करनी है. सो ये वाला ग्राफ भी यार आपके पास्ट पेपर्स में काफी दफा आया हुआ है. सो इस वाले ग्राफ की भी जरा एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. So this time around, I'm constructing a graph of 1 upon lambda, lambda being the wavelength, on the y-axis against kinetic energy on the x-axis. ये important है because ये भी काफी दफा एग्जाम में पूछा जा रहा होता है. So how would you plot a graph of kinetic energy on the x-axis against 1 upon lambda on the y-axis? See, so again, if I start with the basic equation, HF is equal to phi plus Ke. Let's replace frequency by the term C upon lambda. So I'll end up getting this answer. Now I'll leave 1 upon lambda on the left-hand side, and I'll take every other term on the right-hand side. जो मैंने रेड से लिखा है ना वो मेरे लिए रेलेवेंट है. This should be my equation. Again, if I rearrange,
ठीक है, सो वो रोहेल ने सही लिखा था कि आई नीड टू रिप्लेस द फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन, कि मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह c अपॉन लैम्डा कर दिया. So then I've made 1 upon lambda the subject because I need to plot that on the y-axis. अब इसको rearrange कर देता हूँ. Again जो red वाले terms है ना, वो मेरे लिए थोड़े से ज़्यादा relevant है. मैं purposely equation को इस तरह से लिख रहा हूँ कि for me it gets convenient to compare this equation with the standard equation of a straight line. And the way I've written it in the last statement, you would agree कि अब ये y is equal to mx plus c के साथ perfectly compatible है. ठीक है, the red goes with red, the black goes with black. If I now ask you, how would the shape of the graph look like? So y-axis के ऊपर I'm plotting 1 upon lambda as illustrated. X-axis के ऊपर I'm supposed to be plotting kinetic energy. That's taken care of. अगर आप comparison करेंगे, तो you will once again get a straight line. Only this time, the straight line is not only going to have a positive gradient, बल्कि it will also have a positive y-intercept. ठीक है, तो previous case में जो graph बना था ना, that was a straight line with a positive gradient, but उसका negative y-intercept आया था. Let me just quickly go back at the top. है ना, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. The y-intercept was negative previously. This time around जो graph हम लोग बना रहे हैं, based on the compatibility, we are getting a straight line. It has a positive gradient, and it also has um, a positive y-intercept, which means the shape of the graph would be like this. So it's 1 upon lambda on the vertical axis, kinetic energy on the horizontal axis. If you make a comparison, this is what you end up with. Gradient in this case, यार gradient को हाँ gradient लिख देता हूँ. Gradient in this case gives you 1 upon hc, and a y-intercept in this case corresponds to phi upon hc. अच्छा यार, इसके अंदर if they ask you obtain a relationship for the same question, obtain a relationship between gradient and y-intercept, मैं लिख देता हूँ. आई थिंक आप भी अग्री करोगे रिलेशनशिप क्या बन रही है. कंपेयर करोगे तो आपको जजमेंट हो जाएगी. Gradient is 1 upon hc, y-intercept is phi upon hc. So I think you would agree, मैं रिलेशनशिप को इस तरह से लिख सकता हूँ. ये लर्न कर लेना रिलेशनशिप. y-intercept is equal to phi multiplied by 1 upon hc. And if you are okay, I can replace 1 upon hc by the term gradient. So मेरी जो final relationship आएगी for the second graph, that can be written down as follows. Y-intercept is equal to phi multiplied by the gradient. ठीक है ना, इसको जरा याद रख लेना because ये एग्जाम्स के अंदर ऑन एंड ऑफ यूज में आता रहता है. ठीक है, तो we have constructed two graphs. See, we have constructed two graphs. The first was for kinetic energy versus frequency. That was a straight line with a positive gradient and a negative y-intercept. This is a
जी मोहित, तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ. This is also a straight line with a positive gradient and a positive y-intercept, where the gradient and the y-intercept can be interconnected according to the last equation written over here. मोहित ने पूछा हुआ है, is the x-intercept of any relevance here? No, it isn't. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ gradient और y-intercept की relevance है. सही मोहित? इसीलिए मैंने ग्राफ को आगे एक्सटेंड नहीं किया. बिकॉज द मोमेंट मोहित मैं इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करूंगा ना, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम नेगेटिव, सो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी. ठीक है, सो एक्स इंटरसेप्ट इज ऑफ नो रेलेवेंस इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. अच्छा जी, अब एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, तो जो थ्योरी का नेक्स्ट वाला पोर्शन करना है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग experimental observations regarding photoelectric emission. Okay, the term experimental observations refers to the fact that when the experiment of photoelectric emission was done, what were the relevant observations made by Einstein? ठीक है, so चार ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ. एग्जाम्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, बट जनरली तीन पूछते हैं. So, इनमें से कोई भी तीन फिर आप लर्न कर लेना, लेकिन है वैसे ऑल टुगेदर 4 ऑब्जर्वेशंस. सो कौन सी हैं वो देख लीजिएगा. अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशंस तो फैक्चुअल है, तो आई डोंट थिंक मैं उसकी रीजनिंग या जस्टिफिकेशन दे सकूंगा, दैट्स मोर ऑफ अ फैक्ट. और कुछ ऐसी हैं कि जिनकी रीजनिंग और जस्टिफिकेशन हमें डिस्कस करनी है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अच्छा, ऑब्जर्वेशन की वर्डिंग्स भी जरा एहतियातन देख लेना, एंड देन एज आई सेड कि कोई तीन लर्न कर लेना. जनरली तीन ही पूछ रहे होते हैं. सो पहली वाली ऑब्जर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ photoelectric emission was observed to be an instantaneous process. That is, emission occurred as soon as, short form में लिख देता हूं, emission occurred without any time delay. ठीक है, what that statement means is, अगर emission ने होना है तो वो फौरन से हो जाएगी, और जाहिर है अगर नहीं होना तो no matter how long you wait, emission नहीं होगी. ठीक है, so the process was observed to be an instantaneous process. So if photoelectric emission were to happen, it will happen instantaneously without any time delay. और अगर नहीं होना है तो no matter how long you expose the metal in front of light, no emission will take place. ये पहली observation. Second observation, emission only occurred when the incident frequency F was greater than the threshold frequency F naught. ठीक है, so emission only took place when the incident frequency of the electromagnetic radiation was above the threshold frequency. Third observation, when electromagnetic radiation
of a higher frequency was used, comma. Actually, before I continue, when I say when electromagnetic radiation of a higher frequency was used, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से इसका मतलब ये बनता है कि पहले अगर आपने रेड लाइट को एक्सपोज किया था, a higher frequency simply means कि आपने उस लाइट का पावर चेंज नहीं किया है, उस लाइट का कलर चेंज कर दिया है। मैंने ऐसे ही पावर चेंज नहीं किया, इसका मतलब है पहले अगर 60 वॉट्स का बल्ब था, 60 वॉट्स का बल्ब था जो रेड लाइट एमिट कर रहा था, तो मैंने ऐसे a higher frequency, then that implies it is still the 60 watt bulb, but this time आपने रेड को चेंज करके वायलेट कर दिया है। दिस इज द फिजिकल इंप्रेशन of how frequency can be increased. So the brightness of the bulb is the same, but the color of the bulb is changed. कि पहले red था, अब violet हो गया. That is what we mean by the term when electromagnetic radiation of a higher frequency was used. Comma. Based on the equation HF is equal to phi plus KE. तो phi तो मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, किसी भी मेटल के लिए। H भी कांस्टेंट है। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि अगेन मैं जो जो टर्म्स को रेड से लिख रहा हूं, तो आपको एक जजमेंट खुद ही हो जानी चाहिए। जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स द टर्म रिटन विद द रेड कलर, ये क्या ऑब्जर्वेशन होगी। सो इफ मेटल के लिए वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटल पूरा लिख देता हूं। और एच तो वैसे भी कांस्टेंट है। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी वाज यूज्ड, देन बेस्ड ऑन द इक्वेशन, और आई थिंक यू वुड एग्री, क्या लगता है क्या होगा अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करना डेफिनेटली एक ही इम्पैक्ट कर सकता है, और वो जो इम्पैक्ट होगा वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक यू नीड द एरो, सॉरी। ओके, so when electromagnetic radiation of a higher frequency was used, what that meant was पहले रेड कलर की लाइट थी of a certain power, अब आपने उसको चेंज करके वायलेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, बट कीपिंग द पावर द सेम। सो रेड चेंज टू वायलेट इज एज गुड एज सेइंग कि फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी है। देन बेस्ड ऑन द इक्वेशन HF is equal to phi plus KE, it was observed that the emitted electrons were emitted with a greater kinetic energy than before. Hence, we can say that the incident frequency affects the kinetic energy of the emitted electrons. तो ये आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन के लिए चूंकि मैथमेटिकल इक्वेशन थी ना, तो मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी, बल्कि ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी साथ में मेंशन कर दी। और आई गेस अगर आप भी इसको याद रखोगे, कन्वीनियंट है, यू कांट रियली मिस। इक्वेशन को देख के आपको जजमेंट फौरन से हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करना
will definitely cause electrons to be emitted with a greater kinetic energy. So first two observations were more of a, something that can be seen. और ये थर्ड वाली जो थी ना, दिस इज समथिंग जिसको आप मैथमेटिकली लिख भी सकते थे, तो हेंस मैंने थर्ड वाले के साथ इक्वेशन को भी सजेस्ट कर दिया। और एक फाइनल ऑब्जर्वेशन है, तो पहले फोर्थ वाली ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से दे देता हूं। सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज, if however the frequency was kept constant and instead the intensity of the light was increased। ना पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है। तो मैं स्टेटमेंट पहले कंक्लूड कर दूं और फिर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। What is the meaning of the term intensity of light was increased, but the frequency was kept constant? So, if however the frequency was kept constant and instead the intensity of light was increased, then it was observed that photoelectric current also increases। तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जा सकती है ना, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये सोचना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपको, हाँ वैसे भी रोहिल आपका स्टेटमेंट सही है। पहला क्वेश्चन आपको ये सोचना चाहिए कि यार इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का फिजिकल टर्म्स में क्या मतलब बनेगा। फिजिकली इंटेंसिटी इंक्रीज करने का ये मतलब है कि इमेजिन अगर आपके पास एक मेटल है, पहले आपने ये किया था कि इस मेटल को अ, एक रेड लाइट के सामने एक्सपोज किया था, जिसका पावर था 60 वॉट्स। तो जब मैं ये कह रहा हूं ना कि द फ्रीक्वेंसी वाज केप्ट कांस्टेंट बट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वाज इंक्रीज्ड, इसका फिजिकल टर्म्स में मतलब ये बनेगा कि नेक्स्ट टाइम एनी सजेशन, if the frequency is kept constant but the intensity of the light is increased, so power increase कर दिया, which means कि अभी भी रेड ही होगा, बट ऐसे सोच लें कि आपने पावर को 60 की जगह 120 कर दिया। अच्छा, अब 120 करने के दो मतलब बनते हैं और दोनों सही हैं। अम, आप 60 वाले दो बल्ब यूज कर लें जैसे मैंने बनाए हैं, अ, इसका भी, ये भी सही है, और आप एक ही बल्ब बना दें, उसके साथ 120 लिख दें, वो भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। सो द रेड स्टेज एज रेड बट द इंटेंसिटी इज इंक्रीज का मतलब है कि पावर आपने इंक्रीज कर दिया। एंड विजुअली थिंक ऑफ इट दिस वे कि पावर इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले आपके पास 60 वॉट्स का एक सिंगल बल्ब था, अब आपके पास 60 वॉट्स के दो बल्ब आ गए हैं, है ना। तो पहले लाइट फॉल कर रही थी फ्रॉम अ सिंगल बल्ब, अब आपके सेम टाइम के अंदर लाइट फॉल करेगी फ्रॉम द टू बल्ब्स। टू बल्ब्स भी कहना सही है, और वन बल्ब ऑफ अ हायर पावर, सिंगल बल्ब ऑफ अ पावर 120 वॉट्स, ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। एंगल की कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज गौर से देखो दोनों केसेस में उमर, द लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली। सो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैंने एंगल पे रखा है, वो एक्चुअली मेरी मजबूरी थी क्योंकि जगह जरा कम थी। लेकिन गौर करो, जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने बनाई है ना, दैट इज स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस एट एन एंगल ऑफ 90 इन बोथ डायग्राम्स।
सो वो एंगल वाला फैक्टर तो काइंड ऑफ दोनों केसेस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, अब यार टू अराइव एट दिस कंक्लूजन ने कि क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं वो याद होना चाहिए। वी डिफाइन इंटेंसिटी एज फॉलोज: टोटल पावर falling on a metal surface per unit area. So basically the units of intensity becomes watts per power per meter square for area. And the formula for intensity becomes, अब यार अगर आप इस फॉर्मूले को फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं ना, और फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने ऊपर वैसे स्टेटमेंट ये लिखा था कि if the frequency is kept constant, स्टेटमेंट वापस रीड कर रहा हूं, and the intensity of light was increased, then it was observed that photoelectric current also increases. Let me just highlight this wording. तो ये प्रूफ करके देख लेते हैं इसका मतलब क्या बनता है। So this was the fourth and the final observation. So total power can be written as total energy upon time. अब मैं सिंबल्स की फॉर्म में जिस तरह लिख रहा हूं ना वो पहले जरा देख लीजिएगा। इंटेंसिटी के लिए आई कर देता हूं। अच्छा, टोटल एनर्जी कैन बी रिटन डाउन एज फॉलोज। ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख लेना। सो एच एफ energy of a photon, np जगह जरा कम है ना तो यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ photons. आई एम श्योर यू वुड एग्री कि मैंने टोटल एनर्जी को ब्रेक डाउन करके आई हैव रिटन इट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस: hf energy of a photon, np number of photons. So number of photons np multiplied by hf energy of each photon should give you total energy. तो जो फॉर्मूला आपके पास वर्कआउट करके आया है ना वो पहले लिख लो ताकि फिर इस फॉर्मूले के साथ जो ऊपर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी थी ना उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। सो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स multiplied by energy of each photon time into area. सो आई थिंक अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखेंगे ना तो मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो इम्पैक्ट मैं नीचे एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। हेंस इफ intensity is increased, comma, keeping the frequency constant, then it indicates that more number of photons
will reach the metal surface in a given time. Hence, more number of electrons will be released. Therefore, we can say that photoelectric current increases. ठीक है, तो वो जो टॉप वाला स्टेटमेंट था, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप ऑब्जर्वेशन जो ऊपर थी ना उसको भी देख लें और इसकी जस्टिफिकेशन रीजनिंग की फॉर्म में जो गिवन है ना वो भी आपको नजर आ जाए। तो अगर आप पूरा रीड कर लें, if however the frequency was kept constant and instead the intensity of light was increased, then it was observed that photoelectric current also increases. So I explained you diagrammatically कि increasing the intensity meant कि पहले 60 वॉट्स का रेड एक बल्ब था, अब या तो आपने 120 वॉट्स का रेड बल्ब यूज कर लिया या दो आइडेंटिकल 60 वॉट्स वाले रेड बल्ब यूज कर लिए। सही, एंड देन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला वी रियलाइज्ड कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, मैं इक्वेशन पे शो कर रहा हूं, that would indicate that more number of photons will reach the metal surface. तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ photons arriving on the metal surface ज्यादा हो जाएंगे। Look at the diagram to recognize that. पहले लेस photons arrive हो रहे थे with a single bulb, दो bulbs के साथ surely more number of photons will reach the metal surface in a given time. जितने ज्यादा photons आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे और जाहिर है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो यू वुड एक्सपेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। So, कोई सिंबल अगर मुझे रिपीट करना हो ना इसमें से, अगर आपको किसी सिंबल की आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है मुझे वो बता दीजिएगा, और अगर इफ यू गाइस आर ओके विद द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो फिर मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे मूव करता हूँ। रोहिल ने लिखा है लेंथ ऑफ द मेटल इज द सेम सो द एरिया इज द सेम। बिल्कुल, सो द लाइट इज फॉलिंग ऑन द सेम एरिया फॉर द सेम टाइम एज वेल। द ओनली थिंग डिफरेंट इज पहले 60 वॉट का बल्ब था, अब 120 वॉट का बल्ब हो गया है। आइदर थिंक ऑफ इट दैट वे, या दो 60 वॉट्स के बल्ब्स हो गए हैं। ऑल्टरनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वे। ठीक है, एरिया इज द सेम, टाइम इज द सेम, सो सिंस ऑल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से कि इंटेंसिटी ज्यादा होने से मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल रीच द मेटल। दिस implies more number of electrons will get excited and will leave the metal surface. So as a consequence effect, the final result will be that photoelectric current will increase. ठीक है, तो मैंने नीचे वर्डिंग्स की एक्सप्लेनेशन लिख दी है, फॉर्मूला लिख दिया है। सो फोर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज द प्रोसेस विल ओनली टेक प्लेस if the incident frequency exceeds the threshold frequency. The third observation was using a higher frequency allows the electrons to be emitted with a greater kinetic energy. And the last observation was if frequency is kept constant, however, if the intensity is increased, then increasing the intensity allows more number of photons to reach the metal surface. Consequently, more number of electrons are emitted from the metal, thereby photoelectric current increases. ठीक है, तो ये आपकी चार ऑब्जर्वेशन हो गए। अब थोड़ी सी और आगे थ्योरी का काम करना है।
मैं ये देख लूँ यार, मैं इसी पेज पे कंटिन्यू करूँ या नहीं? मेरा ख़्याल है नहीं करता हूँ। 1 सेकंड देना, क्योंकि फिर वो पूरा पीडीएफ फाइल बनेगा नहीं। अपलोड कर दूँ ना, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाता हूँ। ठीक, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको ताकि आगे थ्योरी करा दूँ। ऑलराइट। तो कंटिन्यूएशन है आगे की। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले कराना है मुझे, और फिर इसकी बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिस्ट करनी है। तो आप पहले सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग्स को देख लेना। सो लेट्स सपोज कि यार आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देयर इज अ फोटो सेल गिवन टू यू। रिमेंबर फोटो सेल को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, तो आई एम होपिंग आपको याद होगा। इसमें आपने एक तरफ एक मेटल को लगा दिया है। The metal on this side is the metal filament, which is the emitter. This was connected to the power supply, battery. Last time हमने डायग्राम बनाया था। दूसरी वाली साइड पे there is a collector. Then there was an emitter. This is your photocell. Okay, the metal used over here is, let's suppose, calcium given to us, and the work function for calcium is given as 3.3 eV. सही है, so एक diagrammatic representation है, calcium is the emitter. ठीक है, calcium is on one side, that's the metal filament or the emitter with a work function of 3.3. On the other side there is a collector, photocell है, emitter है, battery है। Questions क्या है ना वो देखना। First part, आपने इसको रेड लाइट के सामने एक्सपोज किया। The red light has a wavelength of 700 nanometers. First part is determine whether emission occurs. लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो ना, तो हमने ये कैलकुलेशन करी थी कि the first step should be start by calculating the energy of a photon of red light. So based on the formula, E is equal to HF, rather in this case, E is equal to H times C upon lambda. This should be your result for the energy of a photon belonging to red light. या रोहेल हेल्प कर दो, या अली भाई पहले जूल्स में आंसर दे देना। मुझे एक्चुअली इसमें बहुत सारे पार्ट्स कराने हैं क्वेश्चन के, सो मैं हर पार्ट के बाद ये करूंगा शायद कि उस पार्ट को साइड पे कर दूंगा।
जल्दी पहले जूल्स वाला आंसर दो, फिर ईवी में मैं खुद कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, आंसर तो किसी का नहीं आ रहा। रोहेल भाई पकड़ कैलकुलेटर, या अली भाई। सॉरी मैं इन एडवांस। ओके, 2.84 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स। आप कन्वर्ट करोगे ना, एनर्जी का रिजल्ट ईवी के अंदर वर्कआउट करके आ जाएगा। ईवी में भी कन्वर्ट कर दो यार। सो दिस इज द एनर्जी बिलोंगिंग टू फोटोन ऑफ रेड लाइट। मेरी स्क्रीन पे आंसर अभी नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1.5 लिख दूं? 1.78। ठीक है, अब प्लीज हैव अ लुक। फोटोन की एनर्जी इज ओनली 1.78 एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 3.3। सो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस केस में नो एमिशन पॉसिबल। आंसर्स याद रखते जाना। ठीक है, ये सारे आंसर्स आगे मुझे चाहिए होंगे सेकंड पार्ट के अंदर। अब आपने रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया विथ ब्लू लाइट, whose wavelength is given to you as 350 nanometers. बल्कि ब्लू को 300 नैनोमीटर्स कर देता हूँ। सो द सेम डायग्राम, बस रेड की जगह आपके पास ब्लू लाइट आ गई है। एवरीथिंग एल्स इज द सेम, इवन द क्वेश्चन इज द सेम। बट अब मुझे क्वेश्चन में एक्सटेंशंस करनी है। सो द मेटल फिलामेंट, I don't think I need the labeling in each and every diagram, so I'll just directly go with the flow. I'll try to use the same color combination as before. So ये आपका सेकंड सिनेरियो आ गया, इसमें ब्लू लाइट है। Wavelength is 300. ठीक है, द क्वेश्चन इज द सेम। तो आपने लास्ट वाली क्लासेस में ये काम मेरे साथ किया था, तो होपफुली आपको याद होगा। डिटरमिन वेदर emission occurs. So again, we should start by calculating the energy of photon of blue light. This should be the result. 6.63 times 10 to the power of -34, 3 times 10 to the power of 8, 300 nanometers. Energy का result in joules turns out to be, okay, आज सुस्त हुए हो तुम लोग। यार एक सेकेंड रुक जाना। There is a kid Ryan Zafar, which I think he is not in this batch, or maybe he is. Okay, guys, just give me a second now. मुझे लगता है वो शायद गलत बैच में ना आ गया हो। So, Ryan Zafar, I guess you have joined right now. Can you please respond? Um, because Ryan, हाँ, Ryan, ये क्लास तो A levels की है बेटा।
मे बी बाय मिस्टेक, शायद मुझसे गलती हुई है कि ओ राइट, है ना, तुम्हारी क्लास तो खत्म हो गई। योर क्लास वाज बिफोर दिस क्लास, रायन। और तुम्हारी दूसरी वाली क्लास वो संडे के दिन तो होती है ना, आज सैटरडे है रायन। सो मुझे याद पड़ता है वन रायन इज इन ओ लेवल्स, मे बी यू आर दैट वन, और वन रायन इज इन एएस। Isn't this A2? This is A2. Okay, so is there a Ryan in A2 as well? All right, sorry यार, my apologies. I always thought कि रायन जफर नाम के दो बच्चे तो मुझे याद थे। एक ओ लेवल्स में है, उसकी क्लास आपकी क्लास से बिल्कुल पहले होती है, सो आई जस्ट थॉट बाय मिस्टेक वो आ गया है। और एक और एएस के अंदर है, ऑल्सो बाय द सेम नेम, इनफैक्ट स्पेलिंग भी सेम है, और उसकी क्लास कल होती है। मैंने तुम्हारा नाम स्क्रीन पे देखा तो आई थॉट यार मे बी यू वन ऑफ दो, सॉरी यार। ओके, सो यार इसकी एनर्जी का आंसर पहले मुझे उस पे दे देना। रोहिल यार जूल्स में दे ही दे, इसके बाद मैं 4.14 लिख लूं। जब तक रोहिल आंसर दे रहा है ना, मैं कैल्शियम की वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ। फॉर कैल्शियम आई गेस मैंने 5 का आंसर ये दिया था। दिस वाज गिवन एट द टॉप, मेरा ख्याल है नंबर तो यही था, 3.3। ओके यार, सो जो रिजल्ट आ रहा है ना, रोहिल ने जो दिया है 6.63 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19, एंड व्हेन दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड, तो ब्लू के लिए this value is coming out to be 4.14 eV. Okay, so for a fact, if I now ask you to make a comparison, just like in the previous class, you would remember कि इस केस में emission होगी, है ना? And the reasoning should be, अच्छा रीजनिंग क्या होगी emission की? अगर आपको वैसे रीजनिंग लिखनी हो ना emission की, तो आप भले इस तरह से लिख सकते हैं कि the incident frequency is going to be greater than the threshold frequency, therefore emission occurs. या ऐसे भी लिख सकते हैं, energy of the photon 4.14 is greater than the work function 3.3, therefore emission is occurring. So इसका आंसर हो जाएगा emission occurs. Okay, now the next part. रोहिल ने लिखा हुआ है since energy is inversely proportional to wavelength, a lower wavelength indicates higher energy of a photon, बिल्कुल सही है, and higher work, बिल्कुल सही है। ठीक है, so yes, emission definitely हो रही है with blue light। अब मेरा थर्ड पार्ट, why the emitted electrons will have a range of kinetic energies। पहले क्वेश्चन की वर्डिंग समझो। रेड लाइट के साथ तो emission हो ही नहीं रही थी, so this question wouldn't have made any sense with red light। Blue light के साथ once you have confirmed कि emission हो रही है, so now my question is, why the electrons that are going to be emitted, just as a diagrammatic representation, the electrons that are going to be emitted, why should we expect electrons to be emitted with a range of kinetic energies? ठीक है, so इसकी अप्रोच का आंसर कैसे देंगे? आई एम श्योर मैं पहले वर्डिंग्स लिख लेता हूं, तो आई थिंक आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं रादर, फिर इसके बाद वर्डिंग्स को अप्रोप्रिएटली लिख देता हूं। तो रिमेंबर, metal has free electrons, है ना? And the term free implies that the electrons are not restricted in any way. Rather, the term free implies that the electrons are completely free to move in whichsoever direction they want to move. इसका मतलब है कि you would all expect कि metal के सारे electrons एक जगह पे नहीं होते हैं। Since the electrons are moving freely,
सो दे हैव अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के बिल्कुल सरफेस के ऊपर होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स might be a few layers beneath the surface. So since the electrons are free to move ना, वो continuously move कर रहे होते हैं randomly in different directions. So at any given instant, some electrons are going to be very close to the surface, while others are going to be slightly embedded within the surface. Now when light is going to fall, तो जो बिल्कुल surface के ऊपर होंगे ना, उनके लिए emit होना आसान होगा, तो वो maximum kinetic energy के साथ emit हो जाएंगे। और जो थोड़े से surface होंगे, even they are free electrons, but वो right on the surface नहीं है, थोड़े से within the surface है, तो उनको अपनी थोड़ी सी energy use up करनी पड़ेगी in order to reach the surface. Only then they can escape from the surface. So the reason as to why you would expect the electrons not all to have the same energy, but rather electrons having a range of kinetic energy, उसकी reasoning इस form में होनी चाहिए कि not all free electrons are on the surface. Therefore, those electrons which are embedded within the surface comma might have to use some of their energy to reach the surface before they can be emitted. Hence, they will be emitted with kinetic energy less than the maximum value. ठीक है? So the wording is since electrons are free to move, so not all electrons are confined exactly at the same position. अगर पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही प्रोवाइड कर दोगे ना, तो फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे रोहेल। ठीक है, बट हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे लाइट का सिर्फ इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, सो जब लाइट फॉल करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्लोजेस्ट होंगे, वो फौरन से इमिट हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से थोड़ा सा एम्बेडेड विद इन होंगे ना, वो इमिट नहीं होंगे या देर से होंगे। से देना था, मोहित ने पूछा था, इफ यू डोंट हैव अ बैटरी इन द सर्किट, कैन करंट नॉट बी रिकॉर्डेड देन? तो मोहित, अगर बैटरी नहीं होगी ना, तो शायद द बेस्ट वी कैन डू इज कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, वो ट्रैवल करना शुरू तो करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो ट्रैवल करके कलेक्टर तक पहुंच भी जाएंगे, उस तक भी कोई मसला नहीं है। बट कलेक्टर से आगे फ्लो करवाने के लिए जाहिर है आपको पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो अगर आपने एमीटर यहां लगा के रखा हुआ है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली करंट की रिकॉर्डिंग करने के लिए बैटरी का होना जरूरी है ना? अदरवाइज ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स विल लीव द मेटल फिलामेंट, दे विल रीच द ऑपोजिट साइड, कोई मसला नहीं है वहां तक पहुंचने में। लेकिन जब तक बैटरी नहीं होगी ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगे एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो एक तो सारे के सारे कलेक्टर तक पहुंच भी नहीं सकेंगे, स्प्रेड आउट कर जाएंगे, और कलेक्टर तक पहुंचने के बाद आगे तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकेंगे जब तक कि बैटरी ना हो। तो बैटरी इज रिक्वायर्ड आइदर वेज, फर्स्टली ताकि सारे इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड रहें, और सेकेंडली ऑल्सो बिकॉज ताकि वो आगे फ्लो कर सकें। अच्छा, तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी स्क्रीन पे ग्लिच आ गया है, तो मैं स्क्रीन को दोबारा से
रीओपन करता हूँ। ये देखो क्या ज़बरदस्त ग्लिच था, खुद ही मिट गया। जो तुम्हें समझा रहा था, जो मुझे एक्चुअली खुद इरेज़ करना था, वो वैसे ही इरेज़ हो गया। ओके, अब मुझे आगे मूव करना है। मैंने पूछा क्या था कि हाँ, व्हाई द emitted electrons will have a range of kinetic energies। तो वर्डिंग किस फॉर्म में लिखनी है ना, वो आप ज़रा देख लो। द स्टेटमेंट वाज़, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सरफेस। Therefore, those electrons which are embedded within the surface might have to use some of their energy to reach the surface before they can be emitted. Hence, they will be emitted with kinetic energy less than the maximum value. ये तो थर्ड पार्ट हो गया। अच्छा, फोर्थ पार्ट, ये यही क्वेश्चन चल रहा है ब्लू लाइट के साथ। फोर्थ पार्ट, ओके, मुझे क्या कहना था फोर्थ पार्ट में, फोन कॉल के चक्कर में भूल गया। हाँ, मुझे फोर्थ पार्ट ये पूछना था, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी in electron volt and in joules for these electrons। for the emitted electron लिख देता हूं ना यार। ठीक है, सो emit तो हुए थे। so, अब द क्वेश्चन इज आस्किंग कि emit होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। अब अगर आप इक्वेशन को दोबारा देखो, एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइ प्लस के ई। जो फाइंड करना है ना, वो मैं रेड से लिख रहा हूं। तो अगर आपको याद हो तो रोहेल ने मुझे एनर्जी ऑफ अ फोटोन की वैल्यू प्रोवाइड करी थी। मुझे याद पड़ता है 4.14 ईवी। मैं अपनी स्क्रीन पे देख लूं, शायद यही वैल्यू थी। जस्ट अ फ्यू वैल्यूज बैक जी लिखा है रोहिल ने, सो आई एम अज्यूमिंग यही थी। 4.14 बिल्कुल सही है। अच्छा, मेटल का वर्क फंक्शन, ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। मुझे याद पड़ता है मैंने 3.3 ईवी लिखा था। ठीक है, तो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी रोहेल ने ऊपर निकाली हुई भी है 4.14, मुझे अब नजर आई। और मेटल का वर्क फंक्शन मैंने कैल्शियम का आई थिंक 3.3 दिया हुआ था। ये भी आपको रिकन्फर्म कर दूं, चेक कर लीजिएगा। सही है ना। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट कितना होगा। ईवी में स्ट्रेट अवे आ जाएगा। अच्छा, काफी लोग इक्वेशन को यूज भी नहीं करते, वो लिटरली इस तरह सोचते हैं, और आई थिंक ये बिल्कुल सही तरीका है। वो कहते हैं फोटोन आ रहा है विथ एनर्जी 4.14, उसमें से 3.3 मेटल यूज अप कर लेगा इन ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन। तो स्ट्रेट अवे विदाउट एनी फॉर्मूला आप डायरेक्ट आंसर माइनस करके बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दिस केस, जी मेरे भाई, कितना लिखो रोहे। तो ईवी के अंदर आंसर मेरे पास ये आ जाएगा, आई थिंक 0.84 ईवी। और अगर इसी आंसर को आपने जूल्स में भी कन्वर्ट करना है ना, जूल्स का भी आंसर मुझे प्लीज दे दो, जल्दी 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 भाई। क्या लिखूं? अरे यार, मुझे बहुत सारे पार्ट्स करा रहे हैं यार। प्लीज कोई बंदा हाथ पैर मारे। ओके, थैंक यू। 1.34 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19, बिल्कुल सही है। आंसर थोड़ा सा याद रखना। 5 मिनट नमाज, यार सुलेमान थोड़ा सा काम करा दूं ताकि बीच में ना रुक जाए बेटा। ठीक है, बस फिर मैं ओवर करने वाला हूँ, ये मेरा काम कंप्लीट हो जाए फिर ओवर कर देता हूँ। ओके, फिफ्थ पार्ट के अंदर, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जरा केयरफुली सुनिएगा। द बैटरी टर्मिनल्स आर नाउ रिवर्स्ड। कैलकुलेट
ओके अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आई थिंक आपको खुद भी पूछना चाहिए, वो ये वर्डिंग है कि सर हाउ डू वी डिफाइन दिस टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड देन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। इसकी लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, potential refers to voltage. So stopping potential refers to voltage of the battery applied in opposite direction, which causes the photoelectric current to become zero. अब पहले सिर्फ वर्डिंग अंडरस्टैंड करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेट्स नॉट वरी अबाउट हाउ विल वी कैलकुलेट इट, लेट्स वरी अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। सो पोटेंशियल रिफरिंग टू वोल्टेज, स्टॉपिंग रिफरिंग टू द आइडिया कि ऐसा कौन सा वोल्टेज होगा विच विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू बिकम जीरो। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पहले बिल्डअप करते हैं। तो जो ओरिजिनल डायग्राम बना हुआ था ना, उसके मैंने बैटरी के टर्मिनल्स ऐसे बनाए थे जिस तरह आपको मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं। दिस वाज द ओरिजिनल डायग्राम। सो ये कैल्शियम था, ये बैटरी थी। ओरिजिनली बैटरी ऐसे थी, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। अच्छा, फिर ऑन द अदर साइड देयर वाज दिस कलेक्टर, द वन शोन विद द ग्रीन कलर्ड मार्कर। This was the collector. This was the original diagram. Now, electrons were getting emitted, and the collector, since it was connected to the positive terminal of the battery, so the collector was attempting to collect all these electrons. तो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाते थे, फिर आगे फ्लो होते थे और आपका एमीटर करंट को रिकॉर्ड करता था। दिस वाज द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। अब द क्वेश्चन से कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। अब आप खुद सोचिएगा कि जब आप बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करोगे तो क्या होगा। और मेरा ख्याल है आप अग्री तो करेंगे ना कि द मोमेंट आई फ्लिप द बैटरी, which I'm doing right now, the collector will no longer be positive, but now rather the collector will be at a negative potential. Look carefully. And once the collector is at a negative potential, बस माइनस लिख देता हूँ, नेगेटिव लिख देता हूँ। Once the collector will be at a negative potential, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगाएगा, काइंड ऑफ रिपेल करेगा। The question is asking you, what should be the voltage applied in the reverse direction, which causes the value of the photoelectric current to become zero. So that voltage is known as stopping potential, जिसको मैंने Vs का नाम दिया है. So guys, first of all, are you getting the logic behind the question itself? Huh? The battery terminals are now reversed. मैंने reverse कर दिए हैं. लिख भी देता हूँ. बैटरी रिवर्स ताकि याद रहे. और फिर ये आपको खुद याद रखना है कि जब बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स हो जाएंगे तो पहले जो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता था अपनी तरफ, अब वही कलेक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. Hence, the electrons are no longer able to reach the collector. So the question is asking you, what should be the reverse voltage applied that will cause the photoelectric current to become zero? So that voltage applied in the reverse direction, which makes the photoelectric current become zero, is given a special name known as stopping potential. Sorry, Vs, potential referring to voltage,
Stopping referring to the idea voltage applied in the reverse direction which will stop the flow of current to take place. तो वर्डिंग तो मेरा ख्याल है आपने समझ ली है. अब टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कितना वोल्टेज होगा जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टॉप कर सकता है, बहुत सिंपल सी वर्किंग ये है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता था ओ लेवल्स वाला फॉर्मूला, वर्क डन स्लैश काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज. तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की जूल्स वाली वैल्यू यूज करोगे ना, अगर जूल्स वाली वैल्यू यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आ रहा है? 0 पॉइंट. क्या हो गया आज तुम लोगों को? लगता है आंसर देने का मूड नहीं हो रहा मुझे. हाँ जी, रोहिल भाई कहाँ हो? 0.8 पे राउंड ऑफ कर, चलो 0.83 कर देता हूँ, सही है. What this answer is telling you is, अगर आप जूल्स में करते हैं ना, this is one working. What this answer is telling you is कि अगर आप 0.83 वोल्ट्स रिवर्स डायरेक्शन में लगा दोगे ना, 0.83 वोल्ट्स रिवर्स डायरेक्शन में लगा दोगे, तो this voltage applied in the reverse direction will make sure that the collector applies so much of a repulsive force on the electrons that it will not let any of the electrons reach the collector. Therefore, the term stopping potential refers to voltage applied in the reverse direction by the battery that will cause the photoelectric current to reduce to zero. तो मैं assume कर रहा हूँ कि ये वाली वर्किंग अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली है 0.83 वोल्ट, तो फाइनल स्टेटमेंट बता के फिर कंक्लूड करता हूँ. अच्छा, डायग्राम पर से मैं नंबर्स तो मिटा रहा हूँ, बाकी का डायग्राम रहने देता हूँ जैसे बना हुआ था. तो ये मैंने कलेक्टर के साथ बस माइनस लिख दिया, एमीटर के साथ जीरो लिख दिया और वर्डिंग्स ऊपर लिख दिए हैं. तो काफी लोग जूल्स वाली वैल्यू को यूज करते हैं. अगर आपको भी जूल्स वाली वैल्यू सूट करे तो गो अहेड एंड यूज दैट. अच्छा, अदरवाइज आप चाहें तो आप यही वाली वर्किंग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू के साथ भी सेम रिजल्ट आ जाएगा. सेम चीज है, वोल्टेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज. अगर आपको ईवी वाली वैल्यू यूज करनी है ना, तो ईवी वाली वैल्यू यूज कर लेना, फिर चार्ज की जगह ई लगा देना. ठीक है ना, ई बीइंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो ई एंड ई विल गेट कैंसल्ड and you will still end up getting the same answer. ठीक है, यू माइट आर्ग्यू कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट नहीं आ रहा. वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आ रहा होगा बिकॉज ऊपर की कैलकुलेशन में कोई एक जगह पर आपने राउंडिंग ऑफ की होगी. इट्स 0.84 उमर ने लिखा है. व्हाट 0.84 द फर्स्ट आंसर? अच्छा, वो भी 0.84 है. ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ. सही है. सो वी हैव डन द वर्किंग सो फार, फिफ्थ पार्ट तक, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. इस पॉइंट तक आई थिंक मैंने ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा ख्याल है मैं आज कंक्लूड करता हूँ. तो गाइज क्लास ओवर करता हूँ अंदर. थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे.